Good morning to every student. Today we are going to discuss some problems of differentiability and what are the properties of differentiability. Okay. So one problem, let fx equal to 3x square if x less than or equal to 1. If x greater than 1, then fx equal to ax plus b. Find the value of a and b if f is differentiable at x is equal to 1. At x equal to 1. It is given that the function is differentiable at x is equal to 1. We have to find the value of a and b. So differentiable at x is equal to 1 means limit x tends to 1 f of x minus f of 1 by x minus 1 exist. Exist means its left hand derivative must be right hand derivative. Okay. Now the answer, f is differentiable means left hand derivative at x is equal to 1 is equal to right hand derivative at x is equal to 1. So what is f dash 1 minus? You know f dash 1 minus equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h minus f of 1 whole by minus h, where h is a very small positive number. So f of 1 minus h, what is f of 1 minus h? 1 minus f dash 1 minus means x slightly less than 1. If x less than 1, then fx equal to 3x square. So this is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h means replace 1 minus h in place of x in the given function fx equal to 3x square. Kaini na jetolo extra 1 ru san hochi setolo fx ro hela kete 3x square. तो f of 1 minus h माने तमे x जगह 1 minus h पकेबो ए फंक्शन ने पकेया पड़ो 3x स्क्वायर जगह पकेबो. सो दिस इज इक्वल टू 3 into 1 minus h रो होल स्क्वायर. ओके. माइनस f of 1. व्हाट इज f of 1? तो सब्स्टिट्यूट x is equal to 1 in given function. If x less than or equal to 1, then fx equal to 3x square. f of 1 means a 3x square आगा x जगह 1 पकेबो. So 3 into 1 the square 3 into 1 the square whole by minus h. बुझलो? So this is equal to limit h tends to 0 3 into 1 plus h square here minus 2h minus 3 whole by minus h. So 3 टा multiplication कला पर तो यार वैल्यू केता आसियो limit h tends to 0 3 plus 3h square minus 6h minus 3 whole by minus h. So plus 3 minus 3 cancel. Then ये 3h square minus 6h take it common 3h. So this is equal to limit h tends to 0. हमें जो 3h का common बाहर कर दिया है ये कितना है h minus 2 by minus h cancel. So this is equal to limit h tends to 0 means you have to put h is equal to 0. बर्तन h 0 पकड़ लेके तो 3 into 0 minus 2 by minus 1. So this is equal to 3 minus 2 into 6. So f dash 1 minus is equal to 6. And what will be f dash 1 plus? So f dash 1 plus is equal to formula limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 whole by h. This is the right hand derivative formula, you know already. So this is equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h means x greater than 1. 1 plus means x must be greater than 1. If x greater than 1, then fx equal to ax plus b. So f of 1 plus h means substitute 1 plus h in place of x here a given function ax plus b. ax plus b जगह तमे x जगह 1 plus h पकेबो. काहे ना जतो एक्स्ट्रा वैल्यू ला 1 रु बड़ होची सेतले fx रो वैल्यू केते ax plus b या जगह रे हमें 1 plus h पकेबा.
So this is equal to limit h tends to 0 a into 1 plus h, okay, a into 1 plus h minus f of 1, but f of 1 means देखो extra less than or equal to 1, extra 1 to less of किंबा extra 1 संगे equal होबो तबे fx रो वैल्यू अछि 3x स्क्वायर। f of 1 माने तुम एक जगह 1 पकेबो 8 पकेबो 8 पके दो निकल 8 ही पकेबो 3 into 1 square 3 into 1 square by h चला। So this is equal to limit h tends to 0 a plus a h minus 3 whole by h whole by h. So f dash 1 plus, okay, so f dash 1 plus equal to limit h tends to 0 a plus a h a plus a h a plus a h minus 3 by h. But here if we put h is equal to 0, then this will be a plus 0 minus 3 by 0. So a by 0 that does not exist. But given the function is differentiable at x equal to 1, means left hand derivative is equal to right hand derivative. Okay, if left hand derivative equal to right hand derivative, then we find the value of a and b. अच्छा ए हमें ए वैल्यू डायरेक्ट है हम 0 पकई परिबा नहीं ना नहीं, कारण तो गिवन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ए तो जाई जदी 0 पकई दो बोले ए बी रो वैल्यू बाहरी होगी, ए रो वैल्यू तुमको जाना नहीं ना। अच्छा ए और बी रो वैल्यू आनिया पड़ो बोलता ना कौन करिया पड़ो देखो f is differentiable at x equal to 1 means you know a differentiable function must be continuous। जेहेतु फंक्शन का 1 पाकर डिफरेंशियल होछि माने इट मस्ट बी कंटीन्यूअस एट x is equal to 1। तो हम वर्तमान कंटीन्यूटी वैल्यू हम बाहर करिया पड़ो, बाहर कला पर एडी से वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन करिया पड़ो है ना। अच्छा देखो तो कौन पढ़ा दो सिंस f is differentiable it will be continuous। Since f is differentiable at x is equal to 1, that implies f is continuous at x is equal to 1। So continuous means limiting value exists and is equal to value of the function, that is the limit x tends to 1 minus fx is equal to limit x tends to 1 plus fx is equal to value of the function। No, because here the given function is step function, so for step function existence of limit we have to calculate left hand limit and right hand limit। So what is limit x tends to 1 minus fx? So limit x tends to 1 minus fx बोलला it कहता है हमर this will be limit h tends to 0 put to x equal to 1 minus h in place of x or the given function। देखो यार वैल्यू का limit h tends to 0 एडी हमर fx ता केता हो ना देखो x ता 1 टू सानो हो से तो fx ता 3x स्क्वायर, तो हमें x जगह कोन पके 1 minus h पके, so this is equal to 3 into 1 minus h whole square and this is equal to here limit x tends to 1 plus means limit h tends to 0। Okay, limit how to calculate the right hand limit, this will be limit h tends to 0 substitute 1 plus h in place of x, तो एक्स्ट्रा 1 टू बड़ होची fx ता केता हो x plus b हला ना नहीं, तुम एडी x जगह तुम 1 plus h पकेबो, तो limit h tends to 0 a into 1 plus h plus b and 1 plus h plus b and this is equal to f of 1। So what is f of 1? F of 1 means here the value of 3 into 1 square, so this is equal to 3 into 1 square and this implies limit h tends to 0। अच्छा एडी हम वैल्यू राइट बके जो h tends to 0 means you have to put h is equal to 0, so 3 into 1 minus 0 square 3 into 1 minus 0 square। Okay, so this is equal to 8 0 पकेला हम कोन से a into 1 plus 0 plus b हला and this is equal to 3, that implies 3 is equal to a plus b equal to 3, that implies a plus b is equal to 3। So हमर कंटिन्यू टू टेस्ट करिया दो कोन आसला ना a plus b is equal to 3 आसला। बर्तन यार पहला हम राइट हैंड डेरिवेटिव पकेबा
here f dash 1 plus equal to limit h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 by h. So this equal limit h tends to 0 f of 1 plus h means तमे कौन कलो ना x जगह रे 1 plus h पकेलो x जगह रे 1 plus h पकेलो पुडी x plus b रे पकेलो ना सो एडी पकेले आसियो a 1 plus h plus b रे हम छाड़ दिछे एडी b गुड रहियो plus b minus 3 देखो एडी b रे हम वैल्यू से छाड़ दिली तो a into 1 plus h plus b हेलो एबे पर दिस वन એટલે એડી કેતા આસલા તમો a plus b आसला ओके plus b minus 3 बोला बुझा चेष्टा करो सो a plus a h plus b minus 3 हला अच्छा एडी केता आसला हमरो सो दिस विल बी f dash 1 plus equal to limit h tends to 0 a plus b minus 3 by h but here we calculate a plus b is equal to 3 तो एडी जो हम आसला एडी हम बोला लिख देला कोन आसला ना a plus b plus a h minus 3 all by h हला ओके तो एडी हम कंटीन्यूअस टेस्ट करिया a plus b रो वैल्यू 3 आसला तो एडी a plus b जगह में डायरेक्ट 3 पका सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 a plus b जगह में एडी 3 पके दियो 3 plus a h minus 3 by h हला तो plus 3 minus 3 कैंसिल होला ये भी h से कैंसिल है लिमिट h tends to 0 so this is equal to कितना आसला ah by h से कैंसिल है so this is equal to a आसला so f dash 1 plus is equal to a and f dash 1 minus is equal to कितना वैल्यू हमर आसला f dash 1 minus is equal to 6 आसला ना नहीं so for that is we get f dash here we find that f dash 1 minus is equal to 6 आसला नहीं और f dash 1 plus आसला f dash 1 plus is equal to a आसला और वैल्यू कितना आसला a plus b is equal to 3 आसला so for differentiability at x is equal to 1 for differentiability at x is equal to 1 means f dash 1 minus is equal to f dash 1 plus so f dash 1 minus means 6 and f dash 1 plus means a that implies a is equal to 6 and for continuity a plus b is equal to 3 that implies 6 a plus b equal to 3 so a is equal to 6 plus b equal to 3 that implies b is equal to 3 minus 6 so this is equal to minus 3 हला तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेगी हां a और b रो वैल्यू हमें डिटरमिनेशन करले फर्स्ट हमें डिफरेंशिएबिलिटी नेले राइट हैंड डेरिवेटिव बाहर करले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाहर करले राइट हैंड डेरिवेटिव देखले a plus b plus a h minus 3 आसला तो a plus b रो वैल्यू हम आनिया पे तो डायरेक्ट पके होबनी नाइट पके इंफिनिट लाउची तो a रो वैल्यू को कैलकुलेशन करिया पई हमें कंटीन्यूअस यूज करले काहे ना एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस टेस्ट करिया द्वारा a plus b रो वैल्यू 3 आसला तो a plus b रो वैल्यू 3 पकला पर एटा कैंसिल होला ah by h होला एडी वैल्यू आसला तमो a तो राइट हैंड डेरिवेटिव a होला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 6 आसला तो a रो वैल्यू 6 आइला तो b रो वैल्यू आने पाइले हम से कंटीन्यूअस जो बाहर करथिले a plus b टा 3 सेडी पकेली b रो वैल्यू कैलकुलेशन करले so next we see that what are the properties of differentiability of the function. So what are the properties of differentiability? You know, every polynomial function is differentiable on every pair. Every polynomial function
function is differentiable on everywhere that is for all x belongs to R. The polynomial function fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot dot a n x to the power n, where a n not equal to 0 belongs to R. a1 a2 a3 these are constant and n belongs to n. They must be positive integer. So for the polynomial function that सबुडी continuous हो, सबुडी differentiable भी हो, हम continuous भी properties कहते every polynomial function is continuous on everywhere. Like that, every polynomial function is differentiable on everywhere. Means a set of real number on set of real number. Number 2, trigonometric functions. Trigonometric logarithm and exponential function. And exponential functions are differentiable on its domain. The sum difference product and division of two differentiable functions are differentiable. The sum of two differential functions is again a differentiable. The difference of two differential function is again a differentiable function. Similarly, product and the quotient of two differential function are also differentiable. First is every polynomial function is differentiable on everywhere. It is also continuous on everywhere. Trigonometric function, logarithm function, exponential function are continuous. It is also continuous and differentiable on its domain. Trigonometric function तापर domain पाकर सबले continuous होगा, differential होगा. Logarithm function domain डाकते 0 to infinite. Exponential function domain डाका set of real number. तेणु trigonometric function, logarithm function, exponential function are continuous and differentiable on its domain. तापर sum, difference, product and division of two differential function must be differentiable. So one question, so बताते give an example. A function which is not differentiable exactly 3 points. आम एमती गोटे एग्जांपल दियो फंक्शन टी जोड़ा कि जो फंक्शन टा एक्जाक्टली 3टा पॉइंट पाखे डिफरेंशियल हबनी मीन्स यू नो मॉडुलस फंक्शन एंड स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन लाइक दैट दिस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल. mod x is not differentiable at x is equal to 0. Generally modulus function mod of fx हम लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिले जे mod fx का डिफरेंशियल हबनी को पॉइंट रे ना द पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ x whereas f of x is equal to 0. x रो जो वैल्यू पाई fx रो वैल्यू ला 0 होतो से पॉइंट पाखरे डिफरेंशियल हबनी. हम बर्तमान देखले सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन is again a differentiable बा जो फंक्शन डिफरेंशियल हबनी ना नहीं
तार समडा मध्ये से पॉइंट डिफरेंशियल होबनी ओके अच्छा हेले इमिडिया एग्जांपल देबा जे तीनटा गोटे फंक्शन देबा जो फंक्शन रे तीनटा पॉइंट एक्जेक्टली 3 पॉइंट डिफरेंशियल होबनी सपोज वी टेक द फंक्शन fx is equal to suppose we take a mod x देखो mod x is not differentiable at x is equal to 0 out of function mod of x minus 1 which is also not differentiable at x is equal to 1 out function x minus 2 एटा 0 पाकर डिफरेंशियल नो एटा 1 पाकर डिफरेंशियल नो एटा 2 पाकर डिफरेंशियल नो सो आंसर है fx is equal to mod x plus mod of x minus 1 or plus mod of x minus 2 is not differentiable at x is equal to 0 1 2 or you can take fx is equal to fx is equal to x cube minus x तो x cube minus x वाले कौन आस्यो x into x square minus 1 होगा एटा को 0 कर एक्स्ट्रा कौन आस्यो 0 होगा 1 आस्यो और minus 1 होगा it is also not differentiable at exactly 3 points okay next question example give an example two functions give an example two functions which are not differentiable but the sum is differentiable okay देखो give an example two functions which is not differentiable but the sum is differentiable हमें इनका रोड एग्जांपल देगा दिरा फंक्शन जोटा कि डिफरेंशियल हो न तो किंतु सम कलाडो सेटा डिफरेंशियल हो सपोज आंसर if you take let fx is equal to mod of x minus 3 suppose let fx का इक्वल यदि mod of x minus 3 नेबा which is not differentiable at x is equal to 3 which is not differentiable at x is equal to 3 हम आउट फंक्शन लेला gx is equal to mod of x minus 3 आगे नबो प्लस x नेजियो कि प्लस x स्क्वायर नेजियो कि प्लस एनी कांस्टेंट ओके नेजियो एनी कांस्टेंट ओके x स्क्वायर में के x क्यूब ने जानो चलियो एटा मो एती x minus 3 मोड लिखली एला x minus 3 नो मोड लिखली माइनस ऑफ x minus 3 नो मोड प्लस x स्क्वायर नेबा which is also not differentiable at x is equal to 3 fx का डिफरेंशियल 3 पाकर नो gx का मतलब 3 पाकर डिफरेंशियल होबो ना ना नहीं अच्छा ले सम का कौन होची बट fx plus gx f of x plus gx is equal to एटा कैंसिल होची तो x स्क्वायर है x स्क्वायर टा कौन सब पूरी डिफरेंशियल हो because polynomial function x square is a polynomial function which is differentiable on everywhere which is differentiable for all x belongs to R तुम एग्जांपल देखियो मतलब इन स्टाइल तुमको कंसीडर करिया पड़ियो सो नेक्स्ट है differentiability by differentiable on closed interval a comma b differentiable on closed interval a comma b means a function f of x is differentiable defined on a closed interval differentiable on the closed interval a comma b means it is differentiable for each points x belongs to open interval a comma b open interval a comma b रो open interval सब पॉइंट पे फंक्शन ना कोन होतो डिफरेंशिएबल होतो and f dash a plus a रो राइट डेरिवेटिव ए टिके बड़ हबो ए रे भले जदि टिके बड़ होइतिबार f dash a plus ता एग्जिस्ट हबो f dash a plus and f dash b minus must be exist तो गोटे फंक्शन ना क्लोज इंटरवल पाकर डिफरेंशियल माने
से क्लोज इंटरवल भितर ए और बी भितर सब पॉइंट रे फंक्शन टा डिफरेंशियल हेबा दरकार आउ ए रो राइट डेरिवेटिव बी रो लेफ्ट डेरिवेटिव मस्ट बी एक्जिस्ट है राइट हैंड डेरिवेटिव बी रो लेफ्ट डेरिवेटिव एक्जिस्ट है पड़ियो नेक्स्ट वाला डिफरेंशियल में ओपन इंटरवल कम भी बड़े फंक्शन भी ओपन इंटरवल डिफरेंशियल माने it must be differentiable for each points x belongs to a b ओपन इंटरवल डिफरेंशियल माने a और b रो सब पॉइंट रे फंक्शन डिफरेंशियल हेबा दरकार क्लोज इंटरवल माने a b रो सब पॉइंट पाकर फंक्शन डिफरेंशियल हेबा दरकार तार तो a राइट डेरिवेटिव b रो लेफ्ट डेरिवेटिव मस्ट बी एक्जिस्ट हेबा दरकार ओके सो दीज आर ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी सो हमें डिफरेंशिएबिलिटी रो गुडा प्रॉब्लम कले आर डिस्कशन भी आर रिलेशन भी हमें रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल भी हम देखले ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी कहला शॉर्टकट रे तो ये सब जगह तुम वीडियो देखी डिफरेंशिएबिलिटी रो प्रैक्टिस करो एक्सरसाइज करिया पहिले वर्तमान हमें देखिया डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स next we discuss derivative that is the differential coefficients so differential coefficient means derivative you know we read in first year class the derivative and what are the standard formula of derivative let y equal to f of x be a function of x be a function of x the derivative of y with respect to x since y is a function of x we differentiate with respect to x the derivative of y with respect to x is denoted by dy by dx or df by dx or f dash x or y1 or y dash like that or capital D of y or capital D of y etc. This is the notation of derivative y dash or f dash f1 like that. So what is the standard formula? Derivative of a standard formula you know d by dx of x to the power n is the power formula x to the power n derivative of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1 where n belongs to q set where n belongs to q so n into x to the power n minus 1 for example d by dx of x to the power 5 here n is equal to 5 so this is 5 into x to the power 5 minus 1 equal to 4 similarly d by dx of root x so here the power of x is 1 by 2 so power of x is 1 by 2 means n is 1 by 2 so this is 1 by 2 into x to the power 1 by 2 minus 1 so this is equal to 1 by 2 into x to the power minus half into x to the power minus half so this is equal to 1 by 2 into root x so d by dx of root x is equal to 1 by root x एटा फार्मूला नो किंतु फार्मूला ले काम दबो जे d root x और डेरिवेटिव कते 1 by 2 root x similarly d by dx of 1 by x देखो ले 1 by x means एटा 1 रेशनल फॉर्म अछि ता तो पावर गुडा ऊपर फॉर्म नबो this is equal to d by dx of आपको पावर फॉर्म लिखले कोन हबो x power minus 1 जोटा रेसिप्रोकल फॉर्म थियो 1 by 3 कि 2 by 3 थियो माने ताको पावर फॉर्म लिखियो तो x power minus 1 आला x power minus 1 means n is equal to minus 1 so n ना minus 1 ले फॉर्मूला कोन हबो n into x power n minus 1 तो minus 1 into x power minus 1 minus 1 so this is minus 2 so this is equal to minus 1 by x square so remember this formula also d by dx of 1 by x so 1 by x ର ଡେରିଭେଟିଭ ଅଛି minus 1 by x square like that d by dx of q theta of x to the power 7 so q theta of x to the power 7 means what is the power of x
सो दिस इज इक्वल टू डी बाय dx ऑफ x टू एटा के पावर के चला 7/3 है तो पावर टा होची 7/3 मींस n इज इक्वल टू 7/3 तो यूज द फार्मूला 7/3 into x ର ପାୱାର 7/3 minus 1 so this is equal to 7/3 into x to the power 7 minus 3 so this is equal to 4/3 तो x ର ପାୱାର ଫର୍ମ जोड़ा थिबो हम ताको एक्चुअली पावर फॉर्म आनिया पड़ियो आनला पर तुम फार्मूला पके बाहर करियो सो दिस इज द फार्मूला नंबर 1 द dy by dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1 so remember this one derivative of root x equal to 1 by 2 root x d by dx of 1 by x equal to minus 1 by x square like that. Next number 2 d by dx of trigonometric function sin x so you differentiate sin x with respect to x मतलब sin x को हमें derivative with respect to x so this is equal to cos x so derivative of sin x with respect to x equal to cos x d by dx of cos x so derivative of cos x equal to minus sin x तो cos x derivative होची minus sin x d by dx of tan x so derivative of tan x equal to this is equal to sec square x d by dx of cot x तो cot x equal to minus cosec square x then d by dx of sec x तो sec x derivative sec x into tan x d by dx of cosec x so derivative of cosec x minus cosec x into cot x तो sin x derivative होची cos x रो minus sin x tan x रो sec square x cot x रो minus cosec square x sec x रो sec x into tan x cosec x रो minus cosec x into cot x तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रो फर्स्ट लेटर टा c थियो तागे माइनस होइबो cos x रो minus sin x cot x रो minus cosec square x cosec x रो minus cosec x into cot x ये सब जगह हमें फर्स्ट ईयर भी प्रूव करथिले बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड or ab initio method or definition method then d by dx of log x तो generally logarithm function base is e तो general logarithm function log x base e तो derivative कितने 1 by x log x base e next d by dx of log x base a but log x जो base का a थियो माने base का e थियो बोले चलो derivative formula होची 1 by x base a थियो means you know log x base a equal to log x by log a तो base टा होची base टा किसने ना base टा सब बोले e रहियो logarithm function रो base टा e रहियो ताका हम कहउचे natural logarithm आ base टा 10 थिले ताको general logarithm function बोले हम कहउचे बर्तमान जति logarithm function होची these are called all are natural logarithm function base must be e base का e रहियो तनो एडी base a होची माने हम फॉर्म ट्रांसफर करिया सो दिस इज log x by log a ले यार डेरिवेटिव करिया जा यार डेरिवेटिव करिया था log x by log a टा टोटली कांस्टेंट हो डेरिवेटिव कला कांस्टेंट आगु कोन करिया पड़ो हमको बाहर करिया पड़ो तो log a बाहर कला पर log x होइला तो log x डेरिवेटिव केते 1 by x तो d by dx of log x base a equal to 1 by x into log a base e but log a base e equal to ln a log x base e equal to ln x जो logarithm function रो base टा e रहबो ताको हमें ln भी लिखि परिया ln भी लिखि परिया so this is equal to 1 by x into ln a तो log x base a रो डेरिवेटिव केते 1 by x into ln a और 1 by x into log a base e base ता e लिखिला हो न लिखिले भी असुविधा किछ नै नेक्स्ट d by dx of a to the power x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन a to the x तो a to the x डेरिवेटिव कितना हो ना a to the x into log a base e और a to the x into ln a
f x into log base e बोला जाए ln में दिया था where a must be greater than 1 but a not equal to 0 but a not equal to 0 a ର value ଟା 1 ରୁ ବଡ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ not equal to 0 similarly d by dx of e to the x एडी a ର value ଯଦି ଆମେ e ପକେଇବା ଏଠି कोन ହେବ e to the power x log e base e log e base e means log e by log e equal 1 है तो e to the x is 0 डेरिवेटिव होची e to the power x so derivative of e to the x equal to e to the x and so these are the all are derivative of the standard formula sin x cos x tan x cot x sec x cosec x log x base e log x base a to the x and e to the x derivative and derivative of a constant function d by dx of k where k is a constant you know constant function derivative of a constant function equal to 0 like that a constant d by dx of 1 equal to 0 or d by dx of 2 equal to 0 etc next what are the rules of derivative let u and v are two functions of x these are the two functions of x if these are two functions of x so we differentiate with respect to x then d by dx of u plus v u plus or minus v equal to d by dx of u plus d by dx of v similarly d by dx of u minus v equal to d by dx of u minus d by dx of v तो प्लस दिले प्लस होबो माइनस दिले माइनस होबो सपोज तीनटा फंक्शन प्लस हे अछि तो d by dx of u plus d by dx of v plus d by dx of w तो प्लस दिले प्लस करियो माइनस दिले माइनस करियो नेक्स्ट नंबर 2 d by dx of k into u what is k well k is a constant function तो फंक्शन सहित जदि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हेतियो तार डेरिवेटिव करला बेले तो मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट टेकिंग टू आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट कांस्टेंट को बाहर करिली तुम फंक्शन का डेरिवेटिव करियो तो k into d by dx of u similarly d by dx of u by v तो d by dx of u by and third is d by dx of u into v rule so हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लेबा d by dx u into v तो मल्टीप्लिकेशन u कांस्टेंट v derivative d by dx of v plus v into d by dx of u so d by dx of u multiplication v means u constant v derivative plus v constant u derivative number 4 d by dx of u by v division rule u by v so this is equal to v constant into d by dx of u v constant u derivative minus u constant v derivative d by dx of v whole by v square तब डिनोमिनेटर पार्ट जोड़ा थिबो प्रथमे सेटा रखिबो डिनोमिनेटर पार्ट रखि न्यूमरेटर डेरिवेटिव करियो माइनस न्यूमरेटर रखि डिनोमिनेटर रो डेरिवेटिव करियो होल बाय v स्क्वायर देखो these are the main rules of derivative multiplication and division तो मल्टीप्लिकेशन थिले प्लस होबो डिवीजन थिले माइनस पड़ियो बाय v स्क्वायर होबो तो u कांस्टेंट v डेरिवेटिव प्लस v कांस्टेंट u डेरिवेटिव बा u डेरिवेटिव करियो v रखिबो नेक्स्ट v डेरिवेटिव करि दे u रखिले भी हे परियो ओके सो नेक्स्ट फिफ्थ वन इज d by dx of u into v into w सो तीनटा फंक्शन into थियो माने दीटा फंक्शन रिमेनिंग कांस्टेंट रखि अन्य फंक्शन का डेरिवेटिव करियो लाइक दैट u डेरिवेटिव v w कांस्टेंट प्लस u w कांस्टेंट v डेरिवेटिव प्लस u v कांस्टेंट w डेरिवेटिव prime means this the derivative because y derivative of y is also denoted y dash y prime or y bar so u derivative v w constant v derivative u w constant w derivative u v constant so these are the rules of derivative तो प्लस ले प्लस कराबो माइनस ले माइनस कराबो इनटू ले मल्टीप्लिकेशन रूल पड़ियो डिवीजन ले डिवीजन रूल पड़ला ए तीनटा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ले दीटा फंक्शन रखिरी अन्य फंक्शन डेरिवेट कराबो
किंतु फंक्शन सहित कांस्टेंट मल्टीप्लाई थिले आमे कांस्टेंट आर करी फंक्शन डिलीट करियो बा तमे जदी डायरेक्ट u भी पकेबो के कांस्टेंट u डेरिवेटिव प्लस u रखियो के डेरिवेटिव के तो 0 रहियो तो सेकंड पार्ट भी 0 होइला फिर मल्टीप्लिकेशन रूल पका किसी आवश्यक नहीं मतलब यार हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम गोटे जोटे करिया ओके सो e टू द पावर log x base e इक्वल टू x देखो e टू द पावर log x base e अछि सो दिस इज x these are the properties of logarithm function इटा भी हम फर्स्ट भी डिस्कशन करथिले जे a टू द पावर log x base a to the power log x base a equal to x properties of logarithm function e to the power m log x means e to the power log x to the power m but x to the power m is equal to x to the power m e to the power log x to the power m equal to x to the power m log x base a equal to log x by log a base down to e natural logarithm e to the power log fx equal to fx log 0 to infinite log e होची 1 and log 1 होची 0 so एते निहाती भी जाने दरकार नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट so we differentiate using the rules differentiate the following function differentiate the following with respect to x number 1 q to the power x to the power 5 minus 1 by x to the power 10 plus log x base 2 number 2 x by 10 plus 10 to the power x minus 10 by x plus x by 10 plus 10x plus 10 number 3 root x into sin x minus x cube by 1 plus x square okay देखो यार हमें डिफरेंशिएशन करबा with respect to x so number 1 so these are all are the function of x so we differentiate by using rules of derivative so answer 1 let y is equal to q to the power x bar 5 minus 1 by x to the power 10 plus log x base 2 तो आपको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दियो फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लिखिया q to the power x to the power 5 means x to the power कितना 5 by 3 है 1 by x to the power 10 means x to the power कितना minus 10 है plus log x base 2 log x by log 2 तब ये कांस्टेंट है log x by log 2 so y या को डेरिवेटिव करें तो dy by dx is equal to differentiation of the या डेरिवेटिव minus या डेरिवेटिव plus या डेरिवेटिव so this is equal to dy by dx of x to the power 5 by 3 minus dy by dx of x to the power minus 10 है plus dy by dx of log x by log 2 base a तो ये x to the n का फॉर्मूला पकड़ना कौन सी पावर टा होची 3 पावर टा कितना 5 by 3 so this is equal to 5 by 3 into x to the 5 by 3 minus 1 minus x to the 10 and होची minus 10 तो minus 10 into x to the power minus 10 minus 1 है एडी कौन होची log x by log 2 base टा टोटली कांस्टेंट ना तो कांस्टेंट हम आगु बाहर कर दियो so this is equal to log 2 base टा आगु बाहर कर देली and d by dx of log x you know derivative of log x is equal to 1 by x simplify this one so this is equal to 5 by 3 into x to the power 2 by 3 it is 10 by x to the power 11 10 by x to the power 11 ये minus 1 by x into log 2 base or log e अथवा इन डायरेक्ट फॉर्मूला को कले भी हेता था log x base 2 डायरेक्ट कहते हैं log x base a 1 by x into log a base e that is 1 by x into log 2 base a तो सेकंड टाइम बाहर गया डिफरेंशिएशन करिया सेकंड देखो सो दिस इज इक्वल टू y is equal to हमर से अछि
y equal to x to the power 10. Let y equal to first major answer. Let has to take this is y because all are the function of x, so let it be y. So y is equal to x to the power 10 plus 10 to the power x minus 10 by x plus x to the power 10 plus 10x plus 10. यार हमें डेरिवेट करिया देखो dy by dx is equal to यार डेरिवेट हबो d by dx of x to the power 10 रखली थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म होते है स्टैंडर्ड फॉर्म आनिया d by dx of एटा केतना 10 to the power x कली माइनस d by dx of 10 into कहते हैं x पर minus 1 होगा और 1 by x you can write also एटा कौन होगा d by dx of एटा x by 10 होला plus d by dx of 10x plus d by dx of 10. So individual version हमें differentiate करेंगे तो this is equal to देखो x to the 10 means एटा को फॉर्मूला x to the n हो so this is equal to 10 into x to the 10 minus 1 9 होला एटा 10 to the power x which is of the form a to the power x formula. तो a to the x फॉर्मूला डेरिवेट कौन a to the power x into log a so this is equal to 10 to the power x into log 10 base e हो काई हमें जति लॉगरिथम फंक्शन ऑल आर बेस e हो इट बेस 10 केबे भी लिखा होनी so 10 to the x डेरिवेट होची 10 to the x into log a इट a होची 10 पर बेस होची e तो log 10 बेस 10 हो 1 किंतु log 10 बेस e टा 1 हो अन log 10 बेस 10 चले 1 हो हमें बे नेचुरल लॉगरिथम पढ़छे नेचुरल लॉगरिथम रो सबले बेस टा e रहबो माइनस ये कहता है 10 ला कांस्टेंट में आगु ने भी टेकिंग आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट x पर -1 मींस 1 by x और x पर -1 डिवाइड करते हैं -1 into x पावर -2 प्लस 1 by 10 ला कांस्टेंट रहला देखो 10 ला कांस्टेंट ना डिनोमिनेटर अछि 1 by 10 आगु बाहर कली x को डेरिवेट करू विथ रिस्पेक्ट टू x d by dx of x dx कैंसिल और x अछि माने x पर कौन रहला 1 रहला ना तो x पर 1 डेरिवेट करले कोन हो 1 into x पावर 1 minus 1 1 into x पावर 1 minus 1 so this is 1 into x plus 0 तो x plus 0 is 1 तो x को डेरिवेट करे विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 थीटा को डेरिवेट करे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 t को डेरिवेट करे विथ रिस्पेक्ट टू t रे सो 1 बट dx by dx कैंसिल होला 1 होला 10x ओके 10x का 10 आगु भाला 10 का कांस्टेंट आगु नली x को डेरिवेट करछ विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आइला खाली 10 डेरिवेट करते 0 कभी का कांस्टेंट तो कांस्टेंट डेरिवेट होची 0 सो यार वैल्यू केतना असला हम टोटल को सिंपलीफाई कर लिखले सो दिस इज इक्वल टू 10 into x to the power 9 plus 10 to the power x into log 10 base e minus plus 10 by x square plus 1 by 10 plus 10 ओके तो यार डिफरेंस न थियला एंड थर्ड वाला y is equal to कोन दिया छी ना √x sin x minus x cube by 1 plus x square तो थर्ड वाला डिफरेंस का बढ़िया आंसर 3 let y is equal to √x sin x minus x cube by 1 plus x square या डेरिवेट करो so dy by dx is equal to d by dx of this one d by dx of √x sin x minus d by dx of x cube by 1 plus x square तो यार डेरिवेटिव माइनस यार डेरिवेटिव एडी कोन पड़ियो u into v मल्टीप्लिकेशन रूल काइंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अछि एटा डिवीजन फॉर्म अछि एटा डेरिवेटिव डिवीजन रूल पकेबा एटा डायरेक्ट बार करिया बोले मल्टीप्लिकेशन रूल पकेबो सो एटा मल्टीप्लिकेशन रूल पको तो हमें को बाहर करिया फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल फर्स्ट एक गोटे बाहर कर दियो और डायरेक्ट पके दियो u कांस्टेंट into d by dx of sin x plus sin x कांस्टेंट रहला into d by dx of √x फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव माइनस और सेकंड पार्ट डेरिवेटिव करिया डिवीजन रूल u by v तो u by v मींस डिनोमिनेटर पार्ट कोड अछि फर्स्ट देखिया पड़ियो डिनोमिनेटर कोन अछि 1 plus x square तो 1 plus x square का कांस्टेंट रखियो फर्स्ट डिनोमिनेटर पार्ट का 1 plus x square into numerator डेरिवेटिव d by dx of x cube
इंटू थिले प्लस हो बाय थिले माइनस हो माइनस x क्यूब इंटू d by dx हो 1 plus x square होल बाय d स्क्वायर तो 1 plus x square होल स्क्वायर होला। तो यार डेरिवेटिव बाहर करो केता आसी देखो। सो दिस इज इक्वल टू हमें मल्टीप्लिकेशन रूल पकड़ले फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है कौन पकड़ले डिवीजन रूल पकड़ले। अच्छा सो दिस इज इक्वल टू रूट x कांस्टेंट होछि sin x डेरिवेटिव यू नो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x cos x प्लस sin x रहला यू नो डेरिवेटिव ऑफ रूट x मींस x पर 1/2 पावर पुनः पकेबो बा डायरेक्ट पकेले रूट x डेरिवेटिव केता हो 1/2 रूट x। सो मन रखो रूट x डेरिवेटिव माइनस एडी केता आसला 1 plus x स्क्वायर का कांस्टेंट रहला 1 plus x स्क्वायर रहला तो x क्यूब रो डेरिवेटिव केता रहला 3x स्क्वायर रहला काई एंड आउट 3 रहला माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब into d by dx of 1 plus x square तो यार डेरिवेटिव केता हो 1 plus x square डेरिवेटिव माने एटा तो एडिशन फार्मूला पड़ला 1 डेरिवेटिव plus x square 1 डेरिवेटिव केते 0 0 plus x square डेरिवेटिव केते 2x तो 0 plus 2x होल बाय 1 plus x square स्क्वायर तो एटा हम सिंपलीफाई करले कोन आसियो। सो दिस इज इक्वल टू एटा जेमति रखि दियो रूट x cos x प्लस sin x by 2 root x माइनस ये केता आसियो। सो ये आसला तमरो एटा मल्टीप्लिकेशन करले केतो होछि 3x स्क्वायर प्लस 3x फोर्थ माइनस 2x फोर्थ माइनस 2x फोर्थ होल बाय 1 plus x square होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करली। सो दिस इज इक्वल टू एटा हम जदी फर्दर सिंपलीफाई करिया राइट साइड ता सेकंड पार्ट ता एटा जेमसिन थाउ कोन किछ असुविधा नै रूट x cos x है प्लस sin x by 2 root x है माइनस ये कहते 3x स्क्वायर प्लस 3x फोर्थ माइनस 2x फोर्थ माइनस x फोर्थ होल बाय 1 plus x स्क्वायर स्क्वायर। तो आंसर ता एटा भी फर्दर आउट सिंपलीफाई कर लेकिन हो एति रखले भी चलिबो। सो दिस इज द आंसर। नो हमरो मेन एप्लीकेशन दो कोन ना रूल्स ऑफ डेरिवेटिव के हम अप्लाई करके गणित करछे एटा भी हम फर्स्ट ए सब जगह भी हम डिस्कशन करथिले। तेनो ए रूल्स यूज करी आर गुडा प्रॉब्लम तमे बला प्रैक्टिस करो हमर प्रैक्टिस करला के फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बंद रहइबो। तेनो डेरिवेटिव स्टार्ट हला मींस तमे भला वीडियो क्लास भी रेगुलरली देखो आ भला प्रैक्टिस करियो चेष्टा करो जहां पढाउची वीडियो क्लास देखि नोट करो किमा नोट ता देले भी हे पाइबो हैला। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखिया डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल डेरिवेटिव बर्तन हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करिया। थैंक यू।